नमस्कार, आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खाड़ी देशों से 20,000 भारतीय लौटे, विदेश मंत्रालय ने दी स्थिति की जानकारी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी गल्फ असीम महाजन ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र से अब तक करीब 20,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के विभिन्न एयरपोर्ट से भारत के अलग अलग शहरों के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ओमान से भी भारत के कई गंतव्यों के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, जबकि कतर का एयर स्पेस आंशिक रूप से खुला हुआ है। वहीं कुवैत का एयर स्पेस 28 फरवरी 2026 से बंद है। बहरीन और इराक जैसे देशों में जहां एयर स्पेस बंद है, वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब के रास्ते यात्रा करने में मदद की जा रही है। असीम महाजन ने 13 मार्च को ओमान के सोहर शहर में हुए हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस घटना में दुर्भाग्यवश 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास मृतकों के परिवारों के संपर्क में है और ओमानी अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि मृतक भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाए जाने की उम्मीद है। साथ ही ये भी बताया कि इस घटना में कोई भी भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। 20,000 passengers from the region have returned to India. As far as UAE is concerned, as per information put out by the UAE authorities, there is a gradual resumption of operations from Dubai International Airport that were temporarily suspended today morning from passenger safety perspective. Indian and UAE carriers also continue to operate limited flights from other airports like Abu Dhabi, Ras Al Khaimah and Fujairah in UAE based on operational and safety considerations. As per available information, more than 45 flights are planned for various destinations in India today. All passengers can check revised and updated flight schedules directly with respected airlines. In case of any assistance, they can also approach our mission in Abu Dhabi and our consulate in Dubai through the 24/7 helplines. In Saudi Arabia, flights are operating from various airports to destinations in India. Flights are also operating from Oman to various destinations in India. Qatar airspace is partially open, with Qatar Airways operating flights to India. Today and tomorrow, 3 flights are expected to operate to different destinations in India. Kuwait airspace has been closed since 28 February 2026. Special non-scheduled commercial flights by Jazeera Airways of Kuwait are expected to operate soon to India from the Al Qaisuma International Airport in Saudi Arabia. For Indian nationals in Bahrain and Iraq, where airspace is closed, transit through Saudi Arabia is being facilitated. An update on the incident in Oman. On March 13th, in an attack in Sohar city in Oman, unfortunately, 2 Indian nationals had lost their lives. The Embassy of India in Muscat is in constant touch with the families of the deceased Indian nationals and is coordinating with concerned Omani authorities. Their mortal remains are expected to be repatriated to India soon. The embassy also remains in close touch with the hospital authorities and the company to monitor the condition of the injured Indian nationals. None of the Indian nationals are seriously injured. On the incident in which Safe Sea Vishnu was impacted off the coast of Iraq, our mission team has been on ground in Basra to assist for the early return of the 15 Indian crew members of Safe Sea Vishnu who were safely evacuated and are currently residing in a hotel in Basra. They are also coordinating with the concerned Iraqi authorities for early return of the rescued Indian crew members and for early repatriation of the mortal remains of the Indian national who unfortunately